Good evening, you're watching Newsroom Newsbreak. The big story, the National Green Tribunal has imposed a complete ban on the sale and use of firecrackers in Delhi and adjoining areas starting midnight of the 9th of November to the 30th of November. The ban has been imposed ahead of Diwali to prevent a further rise in air pollution already in the severe zone. It is terrible today in Delhi with the air quality index above 600 in several parts of the national capital. Remember, the World Health Organization says up to 50 is considered good air. Above that is less optimum. Now it is above 600 earlier today in some parts of Delhi. All of Delhi well above 500 earlier in the day. The order will be applicable to more than 24 districts across 4 states that are part of the National Capital Region. Nationwide, the ban on firecrackers will be applicable to all cities and towns where the average ambient air quality in November last year was poor or worse. That's what the Green Tribunal has said. Only green crackers considered to be less polluting will be sold in cities and towns where air quality is moderate. The tribunal has also ordered and restricted timing on the use to 2 hours as specified by the state because of COVID. And there are timings which have been specified on when you can burst firecrackers, that too in cities with moderate and below moderate air quality index. So not very many in India at this stage among the big cities. On Diwali 8 to 10 p.m, Gurpurab 8 to 10 p.m, Chhath 6 to 8 a.m. The timing to burst firecrackers, again as I mentioned, only at certain times. Christmas and New Year's Eve 11:55 p.m. to 12:30 a.m. Well, the big point over here is that there are so many agencies now which have existed in the past to actually look at air pollution. What exactly have we succeeded in doing so far? There's been the EPCA, GRAP, NCAP, CPCB, and now CAQMNCRAA. It's unbelievable. These agencies are meant to monitor and control pollution. The intentions are all very well, but the result for those in North India, or certainly the National Capital Region, look out the window. The air quality index has crossed 900 in Delhi and the National Capital Region. States still going back and forth on the cracker ban. Political considerations are these precedent over the right to breathe. And a quick look at the most polluted cities in India at this stage. The air quality index across the cities at the moment: Bulandshahr, Manesar, Dharuhera, Hisar, Bhiwadi, Ghaziabad, Gurugram, Greater Noida, Noida and Delhi. Just remember that within each of these towns and cities are areas where if you have an average of close to 500, certain areas would be substantially higher. It is absolutely unacceptable by any standard. Subhash here, who hails from West Bengal. Let's try and understand from him that the NGT has put a ban on firecrackers. So how are the people in fact reacting to this order of ban on firecrackers in the entire NCR region? सर एक बात बताइएगा सुभाष जी, कोर्ट ने पूरे के पूरे NCR इलाके में गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद सब जगह पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया है। कहा है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो बैन रहना चाहिए 30 नवंबर तक। क्या लगता है, क्या स्वागत करते हैं आप फैसले का? हाँ जी सर, सब लोगों से अनुरोध है, देशवासियों सबसे, कि जो बम पटाखे से दिवाली नहीं बनता है। दिवाली दिए मोमबत्तियों से बनता है, मिठाइयों से बनता है। अब जब सरकार जब बोल रहे हैं कि थोड़ा दूरी का फासला रखो, मास्क से यूज करो, तो सरकार के नियम कानून के हिसाब से जाना चाहिए। नहीं तो ये हमारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो फैल रहा है वो कम नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, काम क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम करते हैं। तो क्या समस्या पोल्यूशन की वजह से आपको हो रही है? रोजगार आपके काम करते हैं, हेल्थ की बात करें, क्या क्या समस्या हो रही है? सर एक तो आंखों में प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो जलन से हो रहे हैं प्रदूषण के कारण। ऊपर से सांस लेने की तकलीफें हो रहे हैं। ऊपर से जो लेडीज हैं, गर्भवती महिला हैं, उन्हें भी बहुत असर होता है। तो घर पे आप अगर पर्सनल बात में पूछूं तो बच्चे वगैरह है आपके यहीं पे रहते हैं? हाँ जी सर। तो उनको आप बाहर जाने दे रहे हैं इस वक्त? सुबह की बात करें या घर पे बूढ़े जो होते हैं? अब क्या करें सर, हम गरीब लोग हैं, काम रोजगारी करना पड़ता है, तब तक घर में बंद रहेंगे, हमें तो बाहर निकलना ही पड़ता है। ये तो सही है, मगर दीपावली है, खुशी मनाओ, हर चीज मनाओ, दिया जलाओ, पूजा पाठ करो,
मगर जो चीज़ से हमको नुकसान है, हमारे भाई लोगों को नुकसान है, वो चीज़ पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो पटाखों के ऊपर, पटाखों का समर्थन अभी इस साल नहीं कर रहे? नहीं करना चाहिए। और प्रदूषण की अगर बात करें तो क्या असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी के ऊपर? हाँ, असर पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है। सुबह ज़्यादा दिखाई देता है, अभी तो फिलहाल कम हो गया है। प्रदूषण होता है, ज़्यादा होता है, और पटाखों से तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है हमें, और हो भी रही है। काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हर साल इतने सारे लोग की डेथ हो रही है पोल्यूशन की वजह से। बीमारी गंदगी फैलती है हमें, क्योंकि हमें साफ स्वच्छ हवा वातावरण चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन की वजह से हम काफ़ी बीमार पड़ते हैं सर। अच्छा, इस साल कोरोना भी है और इस साल पोल्यूशन का लेवल दोबारा बढ़ गया है। जी सर। ज़रूरी था पटाखों के ऊपर बैन लगाना? जी सर, ऑफ कोर्स बिल्कुल ज़रूरी था सर। कोरोना की संकट में हम हर कोई किसी को मतलब एक दूसरे को संपर्क में नहीं रहे, थोड़ा दूरी बना कर रखें और मास्क जरूर लगाएं। हर किसी से मेरा निवेदन है और विनती भी है, और मेरा कहना यही है कि सर पटाखे के ऊपर हर कोई किसी को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए।